Assalamualaikum, ladies and gentlemen, and welcome back yet to another episode of Firestarter. Today we're here with one of our personal favorites, I would call him, because a lot of people talk about this gentleman as a legend when it comes to advertising. Maybe you've guessed him, maybe you haven't. We're talking about Neil Christy. Thank you so much for joining us. We are so obliged that you took out time for us from your busy schedule. Thank you so much. My pleasure. Tell our viewers a little about who actually Neil Christy is. Neil Christy, I am the son of a very famous and well-respected pilot, Air Force pilot. He was in the Pakistan Air Force. His name is Peter Christy, and he has won the second highest Forces Award, which is Sitara-e-Jurrat. Fabulous. My entire family has been associated with the forces. Our entire life we've lived in PAF base Masroor. Oh, nice. My mother was headmistress over there, and she's also very famous in her field, which is education. Fabulous. And I went to UET to study engineering over there. Okay, that's interesting. Yeah. And I was very fond of advertising, and the reason I was passionate about this field was that I saw a great need to improve the standards of advertising over here. Even today, the standards of advertising are actually very depressing over here. So since I was in 10th grade, I always used to think that I can do much better than what they're doing on television, Pakistani advertisers. And I came up with ideas, and I tried real hard to get into advertising. And university, when I went there in 1988, in 1990 I came for a vacation, and there was this ad I saw in the newspaper, a small advertising agency, and I was driving past there, and I just went there to give an interview. And I didn't even know what a CV looked like. So the person said, we need to see your CV. So I took a notepad from her and I wrote down my CV, and I said, this is my CV. And next day they called me for an interview. And during the interview, the CEO of that company briefed us on an advertising campaign that they were about to do. And he was supposed to give us an hour or so to come up with some ideas. And I was in a hurry. So while he was briefing me, I completed the campaign. And as soon as the briefing was finished, I gave him that I'm finished, I've done my work. And he looked at me in a not so friendly way, but I left. The next day I got a call and got into advertising. So that's how I started my career in advertising. Obviously, everyone was very worried because the university thing was there, and I left my engineering, electrical engineering, which was obviously a very lucrative and respected profession over here, and leaving that and coming into advertising. I faced a lot of resistance from everywhere, but the good thing is my family was very supportive. So especially my mother and my sisters in the beginning. And when I started the company, my wife and my mother and the close immediate family was very supportive. My uncles used to say कि ये तो models और parties के चक्कर में जा रहा है. But the fact is कि अभी कितने साल 20 साल almost हो गए हैं, but कम ही parties, मेरे ख्याल से शायद 2 parties में मैं गया होऊंगा. So, but the work is, I'm very, very, very passionate about the work, and the entire, I think, motivating factor is to somehow uplift the standards of advertising in Pakistan, because they are so basic and raw that it's very depressing to see ads over here. And even what we go through, it's not that we are making amazing ads, we are also going through the same rut and cycle, and a lot of, let's just say, people are to blame, including ourselves. But basically, the fact of the matter is that the advertising industry in Pakistan is really not impressive. So, I can totally understand the fact कि जी एक Air Force pilot का बेटा, educationist का बेटा, going into advertising, and as you said so rightly, so how did the change, how did you face all of this regard कि जो आपको मिल रहा था कि जी क्या कर रहे हो, advertising में जा रहे हो, models के लिए जा रहे हो, what was going through your head at that time? I think एक बहुत important चीज़ है, एक कोट मुझे बड़ा अच्छा लगता है जिस पे मैं अपनी सारी philosophy बेस करता हूँ, which is the only things I regret are the risks that I never took. So the idea is basically कि हमारे
जो है ना एक डिक्टेटरशिप वाली और एक कल्चरल हमारी चीज़ है कि पेरेंट्स टेंड टू पुश, एंड दिस इज़ अ ग्लोबल ट्रेंड बट हमारे यहाँ ज़ाहिर है ज़्यादा है, to push their children towards something that they like or something that they feel is secure. डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे या इस तरह one की of the चीज़ें। above, बिल्कुल। So इसमें ये बड़ा होता है कि if you're really passionate about, और obviously मैं भी अपने बच्चों को शायद थोड़ा गाइड करूं, but एक चीज़ जो मुझे अच्छी सपोर्ट भी मिली and which I would suggest to all the children also, because उनकी लाइफ भी अफेक्ट होती है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हाउ दे मेक देयर पेरेंट्स अंडरस्टैंड व्हाट इट मीन्स टू देम, बिकॉज ये भी बड़ी एक चीज़ है कि अगर आप जिद में और गलत तरीके से हैंडल करें तो पेरेंट्स ऑब्वियसली वो बच्चों के लिए ही ये चीज़ें सोच रहे होते हैं। बिल्कुल। बट हमारे यहाँ ये जनरेशन हमारी जो है आई थिंक इज़ वेरी टैलेंटेड, आई टीच ऑल्सो, सो आई सी यंगस्टर्स विद ग्रेट आइडियाज़ एंड ग्रेट ब्रेन्स और वो सारी चीज़ें। इट्स जस्ट के हमारे यहाँ लोग जो है रिस्क टेकिंग में थोड़ा सा घबराते हैं। एवरीथिंग इज़ वेरी सेफ। पूरी दुनिया में अगर आप देखें इंक्लूडिंग इंडिया, पीपल आर आउट देयर कॉन्करिंग द वर्ल्ड। हमारा सबसे बड़ा टारगेट, मैं क्लास में मेरा माई फर्स्ट क्वेश्चन इज़ कि भाई वेयर डू यू सी योर सेल्फ 5 years from now? That is the way I start my class. And almost 90% answers that I get are like मैं जी मल्टीनेशनल में ब्रांड मैनेजर हूँ वगैरह, और मेरी वहाँ से काफ़ी हद तक उनसे डांट शुरू होती है। एंड द एंटायर प्रोसेस हाउ आई ग्रेड देम इज़ दैट आई टर्न देम इनटू ड्रीमर्स। इट्स नॉट जस्ट कि एंटरप्रेन्योर्स हों बट ड्रीमर्स हों, सो दैट दे गो आफ्टर देयर ड्रीम्स। एंड व्हाट आई डू इज़ आई मेक Facebook पे group pages where they predict 5 years from now, and then I would fine tune them towards the direction that they would excel in. So they will चाहे restaurant business हो, चाहे advertising. So it's a mentor slash guide, counseling, guidance, that sort of thing. That's what I try to ignite the spark कि भाई entrepreneur जिसका अपना जो एक चीज़ होती है dream, वो बहुत जिसको कहते हैं चीज़ ऐसी होती है कि यू हैव टू ट्राई, यू हैव टू गिव इट वन शॉट। होता है नहीं होता है, दैट्स योर लक। बट जिसको कहते हैं ना, एक और इंटरेस्टिंग बात किसी ने कही थी कि जिसने पाकिस्तान में नहीं कमाया वो कहीं नहीं कमा सकता। सो ट्रू, बिकॉज यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास होती हैं, इट्स जस्ट हाउ यू कैपिटलाइज इट, हाउ यू एंगेज इट, या हाउ यू नॉट द राइट वर्ड बट हाउ यू मैनिपुलेट द अपॉर्चुनिटी। How long did you work before you actually took the step of starting your own company? Actually, officially 5 years, unofficially 3 years, because I used to freelance a lot. Lovely. And एक जगह तो ऐसा हो गया था कि the company that I was working in, उन्होंने भी बेट किया हुआ था। वो जो थे were earning less than what I was earning, because freelancing में मुझे अच्छे clients और वो God has been kind, और तो वो मिल गए थे। तो उसमें ये था कि आई स्टार्टेड अर्ली, एंड ऑब्वियसली एक अपॉर्चुनिटी एक आई, एक टर्निंग पॉइंट मेरी लाइफ में आया जिसमें आई जस्ट टुक द रिस्क एंड इट हैपेंड। वाओ, सो दिस नेम ऑफ योर कंपनी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। इफ यू कुड टेल द ऑडियंस एंड हाउ डिड यू कम अबाउट दिस नेम? Headline is basically, lion is famous for its roar and communication. कहते हैं जितनी लाउड रॉर लायन की होती है वो किसी वो क्रीचर की नहीं है, लिविंग थिंग की, इतनी लाउड होती है कि वो डस्ट तक हिला देती है। और हमारी बिजनेस इज़ ऑल अबाउट कम्युनिकेशन। बट बात यह है कि आपको दिमाग लगाना बहुत ज़रूरी है। इट कांट बी जस्ट टॉकिंग, यू हैव टू से द राइट थिंग्स। सो वहाँ से हेड एंड देन लायन, एंड सो देयर इज अ कंप्लीट फिलॉसफी बिहाइंड इट। एंड इट्स अ ग्रेट सिंबल। आई हैव अ फुल कलेक्शन ऑफ लायंस। आई लव टू कलेक्ट लायंस, एंड जहाँ जहाँ मुझे मौका, इनफैक्ट कोई भी मुझसे पूछता है क्या चाहिए, कोई बाहर जा रहा होता है, मैं कहता हूँ लायन, किसी टाइप का भी लायन ला दो। I'm a Leo myself, so I was really impressed by all the lions here. मुझे ये बताइए, how was the path from being a freelance? What made you decide कि actually now is the time that I need my full setup, and that leap of faith to make that investment, leave the job? How did that occur? I think by 17 or 18 I had decided कि okay, I'm going to do this thing. Even when I was like I think एक साल हुआ होगा मुझे अपनी एजेंसी में, my senior person, in fact my boss, was making fun of me कि आप जो हैं एजेंसी खोलने के चक्कर में, बड़ा मजाक उड़ता था मेरा, और मैं कहता था मैं खोलूँगा एक दिन। इत्तेफाक से that person is also working with me over here. तो अभी मैं उनको जब कभी बात होती है तो मैं याद कराता हूँ कि यू यूज़ टू लाफ एट मी, जबकि एजेंसी, नाउ वी हैव एन एजेंसी।
तो एडवर्टाइजिंग बिजनेस इस तरह का है कि वो चीज़ें, एंड द इंटरेस्टिंग थिंग इज़ कि बिजनेस करना अगर इतना आसान होता तो सब कर रहे होते. इट्स जस्ट कि आपको जो आई थिंक द बिगेस्ट ट्रेड दैट यू नीड टू हैव इज़ पेशेंस, बिकॉज ये ऐसी फील्ड है कि जिसके अंदर, और सारे आई एम श्योर बिजनेसेस में डाउन ज़्यादा आते हैं, अप्स कम आते हैं, बट द अप्स मेक इट वर्थwhile. बिल्कुल. So if people can sustain, I think having your own brand, having your own thing, having just God to report to, it's a great thing and a great feeling. Absolutely, absolutely. I'm just loving what we're having right now, but we'll take a quick short break, ladies and gentlemen. We'll join you right back. Stay tuned.